Sir, about the application received, sir. Sir, I was hearing in the council, Mr. Uttam Kumar Reddy had given a reply to a question. Civil Supplies Minister, Mr. Uttam Kumar Reddy Saab, told that the council, while answering a question a few days ago, that the cabinet subcommittee is being formed to formulate the rules and format for the issue of new ration cards. Sir, आप हर एक चीज राशन कार्ड से कर दिए, चाहे किसानों के खर्च की माफी हो राशन कार्ड, गैस सिलेंडर होने दो राशन कार्ड से, हर एक चीज को राशन कार्ड से। तो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं वो राशन कार्ड के आए हैं। इस हुकूमत से हम बार बार कहते रहे, साबिका हुकूमत से, उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा कि वहां से यहां आना पड़ा। मैं आपसे कहूंगा कि राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हल करिए। It is also stated that all the government schemes for the beneficiary will be dealing from the white ration card, sir. Sir, I would like the government to clarify on this, sir. White ration card से dealing करेंगे बोल रहे हैं, please आप इसको clarify करिए, sir. Sir, Bhatti Saab has earmarked rupees 31,277 crores for farmers, including rupees 11,395 crores for farmers and tenant farmers, and rupees 905 crores for agricultural labor under Raitu Bharosa, rupees 1,358 crores for payment of bonus of rupees 500 per quintal on procurement of 33 varieties of paddy, rupees 15,470 crores of farm death waivers, and rupees 1,168 crores for Raitu Bima, and rupees 981 crores for crop insurance, excluding the allocation, excluding the allocation under SC, ST, SDF. The allocation in 2023-24 includes rupees 11,629 for Raitu Bandhu, rupees 76 crores for bonus and paddy, and